participating in that goal scoring process and will fill hearts with pride. Especially a lot of you guys watching the broadcast have been huge fan of CR7. Last season we got to see a lot out of him, but this season there had been very rare occasions where we saw that card popping out, and Adizima made sure that he shows the world how it's done. देखिए जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था कुछ उसी लेवल पे ये गेम चलता हुआ दिख रहा है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाइनली हम लोग को कल से देखने के लिए मिल रहा है. लाइक उसके पहले भी एक दिन खेले के आए थे, बट हाँ आज हम लोगों को हर एक गेम पे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है. रोनाल्डो को जिस पोजीशन पे खिलाया जा रहा है, इसी पोजीशन से कहीं ना कहीं रोनाल्डो अपने करियर को शुरू किए थे. तो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार एक आउटकम कहीं ना कहीं निकल के आता हुआ दिख सकता है. और जितने भी फैंस अपने फेवरेट कार्ड्स को आज यूज़ करने का पूरा मौका उनको मिला है. लेकिन देखिए दूसरे गोल के लिए जाते हुए रोनाल्डो बीचों बीच मौजूद. एम्बापे, रोनाल्डो, ओ रिफ्लेक्शन था जिसके वजह से बॉल माल्डिनी के पास गया. नहीं तो वो पास जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार हो सकता था. राइट हैंड साइड से हकीमी ओवरलैप पे. हकीमी एक पास और कहानी घूम सकता है सरांश की तरफ. सरांश towards Mbappe. Mbappe with the finish. 2-1. Once again एडवांटेज ले चुके हैं सरांश. एंड दोनों के बीच में ये कश्मकश चलता ही जा रहा है. जी हाँ, एंड यू नो इसी की ही कुछ अपेक्षा थी हमें, राइट? जब एफसी गोवा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टकराने वाले हैं, ऑफ कोर्स तूफान तो आने ही वाला है और आ भी चुका है. बिकॉज यू नो 30 minutes in, 3 goals have been scored already in this matchup and looks like the 4th one is in the making, but a little ambitious, did not go for that extra pass. Of course was green time, but sadly with not the best of angle, the power kind of missing there, and Saransh had managed to defend. You could see him breaking through that left wing. He's got Theo Hernandez on that overlap, and there you go. The prayer lock also comes in with Kylian Mbappe continuing that passing game. So Saranchen, he wants to go in hard. He does not make it look like that, you know, they have qualified for the playoffs. He's making sure that he builds up his play. We saw last time that beautiful step over coming in with Mbappe, getting him that lead into the game. But unfortunately, this time he's got to wait a little bit longer to score that another goal. As Adizima, he's trying to create his own attack, but Theo Hernandez just thwarts the ball out of play. आदिजीमा उनके तरफ से यही ट्राई किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके विंग पे खेलो और एक पास के साथ मिडिल में लेके आओ. तो उसी तरीके का अप्रोच इधर फिर से एक बार देखने के लिए मिला था. पास भी काफ़ी अच्छा था लेकिन इंटरसेप्ट होता हुआ दिखा, तो जिसकी वजह से बॉल जा चुका है. लेकिन एक गलत पास के चलते बॉल तो खोएंगे ही और आउट ऑफ स्ट्रक्चर भी इधर पकड़े गए हैं डिफेंस लाइन के ऊपर. सरांज, गोल होगा, हो गया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद द गोल फाइनली. वही लीग शू होता तो और मजा आता. Yeah, no Sue, and that's a little sad. And finally, we get to see which Cristiano Ronaldo it is. It's the new team of the week, 92 Cristiano Ronaldo, and very hard to link up. You need some Portugal players, but yeah, that did not happen. But regardless, yeah, getting CR7, scoring it, an equalizer as we approach. In fact, it's the end of the first half. So 45 minutes into the game, nothing separating these two giants. You know, we get to see Saranj taking that lead. Then Adizima comes back. You could see a lot of depth. You could see a lot of structure in both these players in the way they are building up their plays, right? On one side, like you said, I completely agree. You know, Adizima sort of starts his attack, you know, building it from the wings. Then he kind of shifts it towards the centers, then makes those passes, then scores a goal. For Saranchen, he's kind of quite renowned for those slower build-ups, right? Takes his sweet times, keeps that tiki-taka passing on, and plays a lot box to box. But given
the opportunity, if he wants to overlap even with his fullbacks, he does that also. So yeah, this is one for the cards. This is one for the history books. Because FC Goa, Northeast United FC, the first time they had come in, before they could even settle down, they were jolted with a loss. I still remember Saranj going up against his brother Charanjot. That Charanjot was so brutal that he did not even let Saranj take a single shot. Forget about shot on goal. So was the domination showcased Hmm. by CJ. He knew exactly how to beat Saranj. But ever since that day, I think Northeast United, they haven't lost a single game. And now, even after the end of the first half, nothing separating these two Goliaths over here. Two each, a piece for them. And yeah, I think the second half will give us the answers that we are looking forward to. For sure, let's see क्या हम जो देखना चाहते हैं वही रिजल्ट निकल के आ पाता है कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक तो 2-2 चलता हुआ इक्वलाइज कर चुके थे आधी सीमा, और कुछ इसी तरीके का टक्कर हम देखना चाहते हैं। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि कोई एक विनर ज़रूर मारे, ताकि हम लोग को एटलीस्ट ये पता चले कि हाँ, ये ड्रॉ पे ख़त्म नहीं हो रहा, एक अलग मज़ा कहने के आता है उसका। लेकिन सेकेंड हाफ का शुरुआत और सारांश एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टैक पे गए थे। ये गोल भी हो सकता था, लेकिन बेहतरीन डिफेंडिंग फ्रॉम साइड ऑफ आदिजिमा। आदिजिमा जिस तरीके से इधर डिफेंड किए वो काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि एकदम टर्न कर गए थे और उसके बावजूद भी बॉल को रोका गया। बट काउंटर पे आएंगे, लेकिन एज यूजुअल जो जिस तरीके का पैटर्न दिख रहा था पिछली बार आदिजिमा की तरफ से, सेम चीज कर रहे हैं। लेकिन इस बार रोनाल्डो के पास, Oh, रोनाल्डो no way. गोली किए, बट नहीं रख पाए गोल पे। अगर ये गोल होता सू तो बनता था। Yeah. Adizima have that one complaint. How did you score a goal with Cristiano Ronaldo and did not go for the Sue celebration? But yeah, I think, the way Adizima is playing, and I think CR7 kind of even suits his style of play, right? We have seen him going for those crosses, but hold on, Saran Chen almost had built up his play. But another one of those problems with CR7 is that you cannot have him play for the entire 90 minutes. He kind of gets, uh, of course, with the age that I think he's kind of 38 right now. The stamina is not there. So that has been one of those cause of concerns. Maybe around the 70th minute, he's going to sub him off. But yes, I think those crossing plays that Adizima opts for, CR7 gives you that power with those beautiful headers. And that shot that was taken with CR7, had that been green time, I'm pretty sure 100% that would have been going in. So a little bit of timing being messed up as a result. That attempt was squandered. But right, felt for a moment that he would go for a power shot. But yeah, Van der Sar for the rescue. 62 minutes into the game, and still we haven't seen a goal coming from either of the sides in the second half. जी हाँ, या सेकेंड हाफ शुरू होने के बाद से कोई भी तरह से गोल्स अभी के लिए नहीं आए, लेकिन जो चांसेस थे वो बहुत सही बना था इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। बट आदिजिमा, लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि जो चांस इधर बना था एफसी गोवा के लिए वो काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं एक हाफ चांस था, जो कि बहुत टफ भी था वॉली पे। लेकिन फाइनली जब वो बैक पास किए थे मुझे लगा ये तो गया चांस हाथ से, लेकिन फिर रोनाल्डो राइट कॉर्नर पे फिनिश किए और गोल इधर से आया। तो 3-2 फासला क्रिएट करते हुए, और एफसी गोवा, क्या ये उनका वो दिन रहेगा जिस दिन उनको पहला हार झेलना होगा? You देखते never हैं। know. I mean, TT, hey, they still have their co-op game. They still have that final one-shot या showdown. And Adi Sima has expressed his intent that he got CR7 to play. So you can cut a little bit of slack. And at this point, more than accolades, I guess FC Goa would just be looking forward to the playoffs, right? And the kind of a form that these two players are having right now, they look nigh unstoppable. So at this point, for Northeast United FC, getting this victory would, of course, give them that little bit of a morale boost, because
to be honest, when it comes down to playing on LAN, players like CJ, players like Saranj kind of have that extra edge over all these players because they have competed at the highest levels, not just in India but also in the world. So they know how to handle pressure. They know how to make a comeback. Because I still remember, because when it comes down to the storyline of Chennai and FC winning last season's eISL, it was I remember Naveen who got them the trophy in that final matchup, and that was an iconic showdown, which sort of also commanded respect. Even Saranch clearly on his interview said he's my man. And then, there was this little bit of an anime betrayal there. Such was the format last time. It was so brutal that the players from both the winning club, they go up against each other in a 1v1 to decide who represents India in the FGS plane. So this time, thankfully, we've got 2 slots secured. So both the clubs, both the brothers will go, whoever wins. But last time was quite, deadly. But there you go. Saranjan nets one more in, showing no mercy. And this time with Jude Bellingham. And we have seen Saranjan do this even in the past. और 4-2 ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस बार देखिए जब दोनों स्लॉट्स हैं और दोनों प्लेयर मिलके एक साथ जाने वाले हैं, देन वो सिनर्जी भी बना हुआ रहेगा। वो सिनर्जी हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखेगा। बट या फॉर श्योर जो बेस्ट होंगे वही जाने वाले हैं, जो विनर होंगे वही जाने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जिस तरीके से ये गेम चल रहा है, आधी सीमा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में तो आए हैं। हाँ, आखिरी गेम है, लेकिन ये तो हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि आखिरी गेम पे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आए हैं, लेकिन कोई भी जगह से हल्के में नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए एक वो होता है ना कि आप जा रहे हो फाइनल्स में और उसके पहले आप अनबीटेबल अनबीटन रह के जाओ, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। बट क्या गोल था ये, क्या शानदार ये गोल था विद बेलिंगम, राइट लेफ्ट थोड़ा लेके गए, थोड़ा आगे बढ़े, लेफ्ट पैर से फिनिश किया, बेहतरीन गोल। 71 मिनट, अभी जस्ट 20 मिनट बाकी है। क्या 20 मिनट पे कुछ कमबैक आता हुआ दिखेगा या फिर नहीं, वो देखना होगा। बट हालैंड को लेके आ चुके हैं। सो सारांश इधर से कोई भी जो है वो मुश्किल नहीं करना चाहते। जो उनका मेन स्ट्रेटेजी है उसी के साथ स्टिक करेंगे और उसी को ही आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। Yeah, Saranch is always that serious boy. But again, looking forward for another one, but goes for a ball roll when he saw that Adizima was getting his keeper charging at his direction. I mean, I gotta give props because kind of a pace that he was in, the momentum was certainly there, and suddenly to go on a halt. Oh God, the wonders you could do with all these broken cards. But yeah, I think finally Adizima has gotten rid of CR7. He's gotten in Eusebio in his stead. But now Adizima potentially looking at his third goal. Oh, that was a nice heel to heel with Jude Bellingham. I'm surprised he still kept the possession with R9, turns over, takes that shot, but no. That shot kind of lacked a lot of power, and as a result, I think it's going to be a win for Saranch. Saranch does not bottle such leads, right? It's going to take something really special for Adizima to score at least one. As Saranch, again, he's broken free because Adizima has gone all out on attack, so kind of leaves his defense quite vulnerable. With Erling Haaland will take his chance of taking that shot, and every shot that this card touches, Erling Haaland get converted into goal. And this time also was a similar instance, and 5-2 scoreline for Saranch. 5-2 आधी सीमा के खिलाफ। यस, यही सीजन पे आधी सीमा बहुत सारे प्लेयर्स को जस्ट डांस करा रहे थे। वो इधर 5 गोल कंसीड किया और उसी के बीच में कॉन्सोलेशन गोल आता हुआ तीसरा आधी सीमा के तरफ से, तो जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक इधर बाकी के 4 मिनट पे और 2 गोल आ जाएंगे, तो देखते हैं। वैसे एक गोल सरांच की तरफ से जरूर आ सकते हैं, जिस तरीके से वो बिल्डअप पे जा रहे हैं। ओ रेड कार्ड हो सकता था बाय द वे, बट ओ पास ही नहीं किए। लेकिन अगर पास करते तो मे भी चांस बनता, लेकिन विद लेकिन मबाप्पे वो इंडिविजुअल पास के लिए आज तो कुछ अलग ही हो रहा है।
Now even Saransh Jain is enjoying those light moments, right? Now the boys are having fun. That is what we can say from here onwards. Saransh was like, I have to just play my hearts out. I have to somehow make sure that I beat Adzima because in the playoffs, that is one thing that Northeast United FC could come with. If they go on to beat FC Goa and be the only team that has managed to do so. And if that happens, then that would be really amazing, right? Northeast United FC, their run has been such that they had one draw also, and then there has been one loss. So despite even them winning, they're still not gonna topple over FC Goa or maybe even equalize because FC Goa, the goal difference is also massive. And now for where we are at this point, it's a 5-3 scoreline. Northeast United FC have won their first game. They've gotten that lead, and now it comes down to FC Goa's speciality. That is their co-op. But when you're looking at their opponents, when it's Northeast United FC, hey, are they gonna even enjoy that advantage? देखते हैं. देखिए आज के दिन पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड एफसी गोवा लाइक दोनों ही एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों अभी टॉप पे बैठे हुए हैं इस पूरे पॉइंट टेबल के ऊपर. तो मे बी लाइक एक बैटल तो चल रहा होगा बट उसके साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं. तो सब मिला के अगर देखा जाए बहुत ही ज़्यादा मिक्स मैच कुछ फीलिंग्स जो है वो इधर नज़र आएंगे प्लेयर्स के तरफ से. बट ये कोऑप मुझे लगता है कि दो ही बहुत ज़्यादा फोकस के साथ खेलेंगे एंड एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे कि ओपोनेंट क्लब के क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्योंकि ये दोनों ही क्लब रहने वाले हैं प्लेऑफ्स पे. सो एक दूसरे को तो ज़रूर वो एब्जॉर्व करने वाले हैं बट इन टर्म्स ऑफ कोऑप मुझे लगता है कि दोनों के दोनों क्लब्स बहुत ज़्यादा शानदार है. प्ले मेकर्स की अगर बात किया जाए आदिजीमा एक तरफ से प्ले मेकिंग करेंगे ऑन द अदर हैंड हम लोग को इमाद जो है वो प्ले मेकिंग करते हुए दिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से और फिनिशर्स तो ऑब्वियसली इधर मौजूद है ही वी शर्मा एंड उसी के साथ साथ सरांश. तो मजा आएगा वो बहुत बहुत ज़्यादा मजा आएगा. मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है. आई मीन दिस इज गोइंग टू बी the matchup, the co-op that we had been waiting for, right? Both these clubs have the best co-op synergies that you can talk about because you've got Imad and also V Sharma joining in. So this is where it gets really piping hot and really exciting. But let's take a look at the scorecard. And this game, I don't know if Adizima was really try-harding because initially with the beginning of the match he kind of caught in CR7 and still CR7 I think he exploited. But I think the kind of abilities you get with Lionel Messi or maybe Eusebio that he got in later with CR7, I think that is a little bit more. But a win is a win for Saranjan, cannot take that away from him. He was certainly the better player, the more composed player, the one who really showed that intent, that hunger to win, and the result was accordingly. But coming into game number 2, FC Goa, they're not out of this yet, right? They have been in similar circumstances even in the past. But what a storyline would it be, right? Imagine FC Goa go on to win the second game also. And then the battle for that, not just being the winner of this game, and also becoming the overall leader in terms of goal scoring between V Sharma and Imad. But for that to happen, somebody needs to score 4 goals just to get to that equalizer point because Crusher just before that had a 5 goals matchup. So that is going to be interesting because now Crusher has taken over the lead. But yeah, I would love to see the responsibilities coming onto the nimble shoulders of both V Sharma and Imad Rocks because these two players have been magical. These two players have been exciting every single time they come on to play. They do something really out of box, especially Imad, right? V Sharma, on the other hand, he's one of those players who's really threatening. At a moment you might see him being a little lousy, a little casual, but that's just a bait because if you take that, you don't see that goal coming in. He's that kind of a player for me. And for Imad, he is a true magician, right? The way he's been playing, I think he's had the best season, especially considering how his season 1 went.
to his transition into season 2, because it's so difficult for a pro athlete, because I don't see Saran streaming a lot. I don't see CJ streaming a lot. Yeah, of course, quite occasionally they upload a few videos, and if you haven't checked that out, then definitely go onto their YouTube channel. But for Imad, juggling between being a content creator and also being a pro athlete, and he does that with such finesse, right? You kind of tune into Imad's stream. You can just read a book or do whatever, because he's got kind of oozes out that Shroud personality, and I'm pretty sure once he gets that clout, once he gets that traffic, he's gonna make it big even in the content creating industry. And that is something that I have also been urging a lot of these players, even when I met on Landmark. Why don't you guys stream? Show the world what Indian FIFA has to offer. But commencement of the game, and Northeast United FC instantly want to punish FC Goa for that atrocity there, for them losing the ball, as now it's a short corner for Northeast United FC. एक और शॉट लिया गया था हालांकि, बट देखिए अभी भी खतरा टला नहीं है। बॉल जब तक नॉर्थ ईस्ट के पास है तब तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वो कोशिश करेंगे वो एक गोल की, लेकिन लास्ट एडम मिलिटाओ आगे आए, इसके लिए बच गए। अगर उस पोजीशन पे मौजूद नहीं रहते तो शायद सिनेरियो अलग हो सकता था। एफसी गोवा, इनको गोल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप जिस टाइम पे सोचोगे कि हाँ मैं लीड के साथ हूँ या फिर ड्रॉ चल रहा है, दैट्स ओके, उसी टाइम पे एफसी गोवा आके गोल करके चले जाते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वो बिल्डअप करते हैं प्रॉपर। यस, सरप्राइजिंग कुछ मोमेंट जो है वो तो क्रिएट करते ही करते हैं, लेकिन उनका बिल्डअप देख के लगता है कि ये एक गोल आने वाला है जस्ट। तो कुछ उस तरीके का सिनेरियो शायद हम लोगों को दिखे। बॉल पोजीशनिंग भी अभी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। उनके पास उनका बॉल पोजीशनिंग ज़्यादा रहेगा थोड़ा, और लेट्स सी क्या करते हैं वो। एज ऑफ नाउ टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, लेफ्ट हैंड साइड से। ओह माय गॉड, मुझे लगा शायद इधर थियो हर्नांडेज को खिलाएंगे, लेकिन कोशिश था बीचों बीच से डिफेंस लाइन को भेजने की, बट वो अभी के लिए नहीं होगा। Yes, I think that's not going to happen. And one thing we could see, right? Northeast United FC are out for blood. Look at how threatening they've been. And FC Goa, we haven't seen them struggling like this. Kind of making those loose balls. But now a golden chance, and they ought to score, and that will happen. And this is what happens when Adi Zima and V Sharma come to play together as a well-oiled unit. And what a beautiful ball. I'm pretty sure it was Adi Zima creating that chance, and V Sharma, all he had to do was just net the ball in. And this is why FC Goa have been such a fathoming force, and a lot have tried. Trust me, even Bengaluru FC tried, could not break through them. ये 1-0 ऑलरेडी हो चुका है शुरुआती ही जस्ट 15 मिनट के अंदर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मेसी झट से इधर कर देंगे इक्वलाइज। विद दैट हम ये तो कह सकते हैं कि वो जो जिस जंग के लिए पूरा सीजन हम वेट कर रहे थे, वो जंग अभी छिड़ चुका है। दोनों ही साइड से तोप के गोले दागे जा रहे हैं, जो कि एक के बाद एक गोल्स पे कन्वर्ट हो रहा है, और ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। रोनाल्डिनियो फुली क्लियर टू रोनाल्डो टू शॉट, बट आई थिंक रोनाल्डिनियो अगर थोड़ा पहले जस्ट वो बॉल रिलीज करते तो शायद में भी और अच्छा चांस हो सकता था। हालांकि अभी भी चांस है विद एम्बापे, बर्ड वैन डे सार का सेव। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अचानक से एक गोल स्कोर करने के बाद ये मानो बैक टू बैक अटैक करते ही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, और उसी चीज से डील करने के लिए ये पॉज जरूरी था, और ये पॉज लिया गया। ये पॉज के बाद या तो एफसी गोवा के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर एक कमबैक दिखेगा। हालांकि गोल तो दोनों के सिमिलर है, बट जिस तरीके से पिछले 5-6 मिनट पे
गेम देखने के लिए मिला। देखिए शुरू ही हुआ है जस्ट कुछ पहले। देखिए 5-6 मिनट का भी टाइम स्पेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए 5-6 मिनट के अंदर जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला, जो मल्टीपल अटैक्स इधर बनते हुए देखे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, उसको अगर अभी काउंटर नहीं करेंगे तो एक ना एक बार गोल हो ही जाएगा और जिस जगह पे जाके एडवांटेज ले सकते हैं। और पिछला गेम ऑलरेडी सरांश जीत के गए हैं, वो भी एक अच्छे खासे लीड के साथ। सो अगर ये गेम चला जाता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास, दैट मीन्स ये वो पहला टाइम होगा जब एफसी गोवा कोई भी मैच हार रहे होंगे और उन्हीं के सामने जिनको सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, जो कि जाके हरा सकते हैं एफसी गोवा को। सिनेरियो देखिए बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है फॉर एफसी गोवा, बट एफसी गोवा उनकी तरफ से कोशिश यही रहेगा भाई एनी हाउ इस गेम को जीते, देन जाके आखिरी गेम जो है वो डिसाइड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर वह हार जाते हैं देन इधर ही पता चल जाएगा कि इस पीएसवी के विनर कौन है। Yeah, and oh no way, no way that if that goal would have gone in, then I would have just left the desk. That would have been absolutely atrocious, criminal. But with Maldini, I know, Imad, yes, you've scored goals, you've scored you've scored, those trivellas also. We have seen with Maldini, players have been going for those finesse shots also. I think a similar intention was evident from Northeast United FC's side. But for FC Goa, now again on that build-up, little driven pass coming through, a little halt on Mbappe's side. But no wonder, they're still going to try and build up because you could see the defensive numbers are there and they have to beat the players. How to get past one. हार्दिनी देखिए सरदर्द है। देखिए अगर देखा जाए लाइक जिनके टीम में रहते हैं उनके ओपोनेंट के लिए सरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि मार्टिनी को बेट करना बहुत टफ है। जैसा फिजिक है, उस तरीके का पेस है, सब मिला के एज अ डिफेंडर वो जस्ट एक मॉन्स्टर है। तो उनको बीट करके गोल करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली करते हुए दिखते हैं इधर जो प्रो प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे सामने में, क्योंकि उनके पास उस लेवल के कार्ड्स भी है। लाइक मेरे सामने आया था आज सुबह, मैं तो सिर्फ जा रहा था और बॉल देके आ जा रहा था मार्टिनी को, तो कुछ हुआ नहीं ज्यादा। लेकिन इस गेम के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। एम्बापे टू बेलिंगम लेफ्ट हैंड साइड पे, या थियो हर्नांडेज बहुत देर से मौजूद थे। मौका बन रहा है, एक और आसार दिख रहा है गोल होने के, और गोल हो जाएगा। रोनाल्डो फिनिश किए और 2-1 का फासला भी क्रिएट किया। बहुत देर से बिल्डअप चल रहा था, बट जिस जगह पे वो एक पास गया टुवर्ड्स रोनाल्डो, और उधर पता चल गया था कि वो ड्रिबल करेंगे, कुछ भी गोल मार के ही जाए। Such is the beauty and such is the depth in both these squads, right? Northeast United FC, you could just look back and enjoy the quality of that goal, right? Made it look so easy, as if we were cutting a hot knife through butter. But right now, FC Goa, they have to respond back. That's the custom, right? And so have they been doing. And now, Ronaldinho, that little extra pace, just bothering them. It went out for a goal kick. But regardless, now Northeast United FC, they are back on their attack and they would want to just press on the lead that they have created. With this, just that slow build-up, just the way Sharansh likes it. And kind of trying to frustrate FC Goa over here. And I like that. I like that. You could see that panic sort of set in. And the Trivela pass comes in, an outside footer shot. In fact, an outside footer cross. But nothing coming out of it. Because they're not getting their fullbacks, especially on that on their right backs. I think it's kind of triggered for Cap De Villa to be the one going for an overlap. But after the end of the first half, as things stand, just that one goal difference between these two clubs as Northeast United FC, just 45 minutes remaining before they kind of give us what we're looking forward to, a club that goes on to best FC Goa. And that will happen if Northeast United FC win this co-op matchup. आखिरी हाफ इधर कहने की इस
कोऑप मैच के बाकी हैं। ये 45 मिनट्स के बाद हम लोगों को शायद पता चल जाएगा कि यस, इस पूरे eISL सीजन 2 के अंदर कोई भी अनबीटन नहीं रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इधर से एफसी गोवा कमबैक कर जाए, पूरा गेम घुमा दे और जीत के चले जाए और अनबीटन रह जाए। तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो अभी के लिए चलता हुआ, और अगर ये होता है तो 30 पॉइंट के साथ खत्म करेंगे। 10 गेम्स वो खेले होंगे और एक भी नहीं हारे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड की तरह बन जाएगा, एक तरफा डोमिनेशन का, वो भी सिर्फ एक प्लेयर एक क्लब के ऊपर नहीं, पूरे टूर्नामेंट पे। इधर एक मौका बन गया था हालांकि, और बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे हैं। लाइक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अगर बात करें, उनका जो अटैक्स इधर बन रहे हैं वो हर एक अटैक देख के लग रहा है कि यही गोल हुआ वही गोल हुआ। लाइक कुछ भी गलती होता है इधर एफसी गोवा की तरफ से तो गोल हो ही जाएगा। And you know the goals they've scored, right? It's not like, you know, lag gaya bas. Tukka lag gaya ya fir it was a lucky one. The build-ups are so beautiful to watch, you know, every single pass that Northeast United FC have been making, those shots that they've been taking, and there's a purpose. And, you know, they haven't even gotten to their extreme depths, right? Where this also start taking chances, where you get to see Imad, you know, he goes for all those ludicrous trivellas, those finesse shots, even those power shots on those occasions. You know, Northeast United FC haven't even resorted to that yet. So you could see that, yeah, the pressure is kind of lifted over them. It's not them just going full sweaty. But for FC Goa, I can't really say the same. Now you could see that anxiety sort of set in FC Goa because they're kind of facing troubles, right? They're kind of facing issues in trying to kind of keep possession on the ball because Northeast United FC, they've been so airtight, right? Not making any hasty passes, not making any runs that is unnecessary or anything of that sorts, right? And this was one of those chances where FC Goa, having gotten the ball back, they will have to create an opportunity out of it. But yeah, seems like even FC Goa has decided to play it a little bit slower, want to go for a build-up because against Northeast United FC, you know, just getting in, trying to take a shot won't work. सेकेंड हाफ के शुरुआत से ही कहने की नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा अटैक तो कर रहे थे, लेकिन एफसी गोवा बीच में जो मौके बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी लाइक पूरा हो नहीं पा रहा। और वो जिस तरीके से जिस पैटर्न पे खेलना चाहते हैं वो पैटर्न को शायद समझ लिए इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तो इसके वजह से वो फ्लॉलेसनेस नहीं दिख रहा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आखिरी गेम वी शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि पिछले दिन जिस तरीके से वी शर्मा के गैप्स दिखे थे, जो गैप्स ढूंढा गया था उनके डिफेंस के अंदर, आज मुझे लगता है वो ही गैप्स पे एक्सप्लॉइट जो है वो किया जा सकता है इमाद के तरफ से। और इमाद तो खोल के रख देते हैं ऐसे गैप्स को। तो मुझे लग रहा है कि वी शर्मा अगर उस जगह के ऊपर काम करके नहीं आए होंगे देन इमाद आज बहुत ज़बरदस्त कुछ गोल्स जो है वो दाग सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ माहौल है डिसाइडेड, क्या एफसी गोवा इधर से कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि स्कोर लाइन के हिसाब से तो लग रहा है शायद एफसी गोवा के हाथ से ये मैचअप निकल जाएगा और उनका अनबीटन रहने का जो सपना है वो अभी के लिए सपना रह जाएगा। हालांकि वो टॉप पे ही रहेंगे पॉइंट्स टेबल के, वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं, वो फेवरेट्स भी है, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि आप एक पूरा विनिंग रन के साथ चल रहे हो और आपको जीत के ही खत्म करना है, तो वो शायद हाथ से निकल जाए, क्योंकि आखिरी 20 मिनट बचा हुआ है और 20 मिनट पे 2 गोल्स करने होंगे कम से कम। अगर 3 पॉइंट के लिए ट्राई करना है, 1 गोल तो करना ही करना है अगर सर्वाइवल के लिए रहना भी है इधर 1 पॉइंट के लिए। Yeah, I think at this moment, you know, TT, we have seen a similar storyline. I think happened to East Bengal FC, where the star, you know, Ankit Gupta, you know, he used to score goals for fun, and they were looking so good up until those final few days where they kind of started dropping games, and that run of bad form continued even in the playoffs. When we all thought that this season is going to be East Bengal FC season, there is no club that will be able to, you know, kind of put a full stop on them, and you know, I really don't want that happening for FC Goa. I don't know if Adizima was really sweating it out against Saranj, especially with that CR7 early sub-in. But regardless, you know, you could see that Saranj was playing the match with an intent to win.
And yeah, there were a few corners that were loose, and Saransh really hit at the spot. But this goal they have to convert, and no, no way! How? How did that go? And even Adizima and V Sharma, both of them surprised because the intention with that ball roll was to pass it on, and suddenly it goes to the defender and it gets netted in. And not a goal that FC Goa would have thought, but a goal that they would take with open arms. As now, in those dying phases of the game, they have managed to equalize. Oh God. और सिर्फ एक नहीं 2 टचेस लगे 2 बार 2 डिफेंडर से लग के इधर गोल के अंदर चले गए। ओह माय गॉड, लाइक ये पहली बार देखा मैंने पूरे फीफा। अभी मैं 4-5 साल से 4 साल से तो खेल रहा हूँ और 4 सालों में ये पहली बार देखा। एक बार एक डिफ्लेक्शन के साथ जाता है, ठीक है, लाइक ये तो डिफ्लेक्शन भी काइंड ऑफ नहीं था, ये पैर घुमाए और लग गया, एंगल कर लेता और गोल पे घुस गया, और वो भी दो डिफेंडर की तरफ से हुआ ये चीज। ओह माय गॉड। Oh, this is hilarious. This is hilarious. I mean, especially when that has to be that equalizing goal. That is going to be a little gutting for Northeast United FC that they let that pass. An own goal. FC Goa says thank you. And now at this point, with just mere 12 minutes remaining, they have to make a few changes, and they have to look forward onto winning this one. But still, that poker face on our chocolate boy Iman. No exchange in his expressions because still have things go in their bag. As oh my God, an outside footed cross comes in. That's an offside. Drama, late drama going on over here. And just when you thought that this could have been the winner, it's an offside, and suddenly it feels like everything is aligning for FC Goa to go on and score that winner. Can they do that? That's the big question. With Hernandez, go for a step over, get that extra pace, have to look for that cutback, but Hakimi does not let that happen, and out it goes for a corner. With that आखिरी 5 मिनट बाकी है इस पूरे एंटायर कप मैच के अंदर। ज़िनेडिन ज़िडान पर नहीं, बॉल लूज करेंगे, मुश्किल में आ सकते हैं। एम्बापे ऑलरेडी रन निकाल चुके हैं, एम्बापे बट नहीं कर पाए बीट इधर हकीमी को। आखिरी अटैक कौन करेगा, और क्या एक और गोल बाकी है इस गेम से? मुझे तो लग रहा है कि यस, शायद एक और गोल देखने के लिए मिलेगा, बट कोशिश काफी अच्छा था, बट बीट नहीं कर पाए। आखिरी बार के लिए बॉल मिला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, लेकिन वो उनका अटैक नहीं होगा। अटैक होगा एफसी गोवा की तरफ से, बट डिफ्लेक्शन एट कॉर्नर के लिए गया। दैट मींस ये लास्ट कॉर्नर, लास्ट अटैक। अगर एफसी गोवा स्कोर कर देते हैं देन ये बहुत ज्यादा शानदार सिचुएशन क्रिएट करेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाते देन ड्रॉ के साथ ही खत्म होने वाला है लग रहा है। लेकिन अभी भी खतरा नहीं टला। ओह ये डिफ्लेक्शन, ये छोटा सा डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा काम किया रुडुलीत का, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को और एफसी गोवा को ही पता है। Yeah, and for the first time in the season 2 of eISL, FC Goa, they look to be not winning a game. That's not going to happen. At the very least, I mean, at the very max, they can get a draw out of this one. But, whoa, what a game it was. Not the kind of a game that I really anticipated, but FC Goa will take that own goal and, yeah, they score that equalizer. And, now heading on into the final game where we have V Sharma and Imad, both of them fighting for not just that glory, but also for being for having that bragging rights of scoring the maximum goals during the league stages. Where if you sort of break down this matchup, Northeast United FC did majority of the heavy lifting in the first half itself, right? Looked very much organized, very composed. But for FC Goa, they had one beautiful goal. The second one was a little scrappy. That was an own goal from Northeast United FC. But you could see, right, the moment they get inside the box, Northeast United FC, they get so threatening.
And even on one of those occasions where I think the third could have come in for them, and this one, oh my God. The next chance that was created turned out to be an offside. But had that been converted into a goal, had he been onside there, that would have been one of the most spectacular goals of the evening, or even if in this particular week. But yes, as things stand, folks, Northeast United FC have cemented they'll at the very least take 1 point. But if Imad manages to beat P. Sharma, then they're gonna get the entire 3. And not just that, but also they will unlock a new achievement, an achievement that the other 9 clubs, in fact the other 8 clubs, could not have done. And that is that nobody has bested out FC Goa. So yes, at this point, it began with Saranshen beating Adizima. The co-op match, nothing separating the two. We headed to the final showdown. V Sharma and Imad. And viewers, a question out for you guys. What's gonna happen? Let us know who's gonna be the winner in the chat section. देखिए ऑलरेडी कहीं ना कि एक न्यूज स्टैट बन चुका है कि अभी तक एफसी गोवा को किसी क्लब ने ड्रॉ भी नहीं करा पाए थे, बट फाइनली ड्रॉ तो होने वाला है. जीतेंगे तो नहीं, ड्रॉ हो जाएगा, बट क्या हारेंगे या फिर नहीं वो इधर पता चलेगा इस मैचअप पे. इधर इमाद भिड़ने वाला है वी शर्मा के खिलाफ, और वी शर्मा उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है. देखिए हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं कि एक बार भी नहीं हारे, जीत जाएंगे, हार जाएंगे, बट इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी काम में लगा सकते हैं दोनों ही क्लब के प्लेयर्स, स्पेशली फॉर वी शर्मा. मुझे लगता है इस एरिया पे, क्योंकि इमाद तो अपने नेशनल गेम खेलेंगे, बट वी शर्मा पिछले दिन जिस तरीके से उनके डिफेंस को एक्सप्लॉइट किया गया था, हालांकि वो जीते थे, तो उस जगह से अगर आप इमाद के खिलाफ बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाते हो और आप कम से कम सिर्फ एक ही गोल कंसीड करते हो, एक से ज्यादा नहीं करते हो, देन मुझे लगता है कि वो वी शर्मा के लिए बहुत अच्छा होगा और उनके प्लेऑफ्स के लिए उनको काफी सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा. क्योंकि इमाद एक ऐसे प्लेयर है, आपका डिफेंस जितना भी स्ट्रांग हो सकता है कि आपके डिफेंस के बीच में से नहीं, लेकिन ऊपर से जरूर निकाल देते हैं, और कभी कभार ऊपर से नहीं तो साइड से निकाल देते हैं. तो ये जो चीज है, ये अगर आप संभाल लेते हो, दैट मीन्स या जो प्रॉब्लम्स पिछले दिन हुए वो आप फिक्स कर चुके. I mean, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी मात घुस जाते हैं. But yeah, at the same time, V Sharma has a very simple, fundamental approach towards the game. He kind of likes to keep, does not complicate things, right? Makes those right passes, and when you're least expecting him to score, he scores one. And that's the beauty of, V Sharma, right? We know, and we have seen him involve. Hasn't dropped a lot of games, and same with Imad. But when you talk about both of them on an individual level, this is where we find out who's the better player, because both of them, up until Crusher's 5-goal haul, had been equalized. Both of them had scored, I think, if I'm not wrong, 29 goals over the course of their individual matches that they had played. Yes, sir. So 29 goals had been scored by both these players. This is where the debate gets settled. Who's the real GOAT in the league stages? Is it going to be V Sharma or is it going to be Imad? But there's still that extra variable where Crusher has also gotten himself into the equation, where after scoring those 5 goals, he's now at 33 goals scored after his 10 games. So somebody has to score at least those 4 goals tonight, right? If they need to best him. So that is something that we'll have to be on the lookout for, or 5 goals to kind of get past him, because Crusher, he is also an amazing player. And now, considering the fact that V Sharma and Imad both have been the participants in previous season's eISL, Crusher, this is his debut in eISL, and this lad has been already taking everybody by storm. And this was sort of expected when you come and see Crusher play. And yeah, I loved his playing style even 2 years ago. Even now, he's just gotten better, right? Matured like fine wine. So now coming back to this matchup, the build-up is there, the drama is there. Yes, for FC Goa, they will be fighting and they will have to be, winning this game in order to kind of make sure that they still remain unbeaten. They still remain the only club that hasn't lost a single game. But I don't think Imad's going to let that happen. So a quick look, 4-2-4 formation. Interesting, I think,
For V Sharma, he wants to go full attacking right from the start, but for Imad, he's gonna keep things pretty chill. यूजुअली कभी कभार हम लोग देखे हैं वी शर्मा को, लाइक वो 5 लाइक डिफेंडर के साथ जाते हैं एंड वो रहा था लाइक पूरे ज्यादातर टाइम। लेकिन पिछले गेम के बाद से कहने कि उनका फॉर्मेशन चेंज हुआ, मिडफील्ड पे ज़्यादा प्लेयर रखना चालू किया। हालांकि इस बार तो 4-4 खिला रहे हैं, बहुत सारे अटैकिंग जाएंगे और इमाद को काउंटर करने का ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है अगर आप सही से कर पाओ कि इमाद को खुलने का मौका ही नहीं दो। इतना ज़्यादा आप प्रेशर करो, इतना ज़्यादा हाई प्रेस करके रखो इमाद को कि आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। लेकिन उस टाइम पे ध्यान रखना होगा कि आप काउंटर के लिए ज़्यादा जगह ना दो, क्योंकि अगर काउंटर पे मिल गया इमाद को तो इमाद तो छोड़ने वाले है नहीं, तो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली खेलना होगा। वो होता है ना कि आपको अगर आग के साथ खेलना है तो प्रॉपर फायर सूट पहन के जाना चाहिए, तो वो चीज़ है इधर। तो लेट्स सी लाइक क्या होता है। गलत पास कर चुके हैं, बॉल कंट्रोल चला जाएगा इमाद के पास और इमाद फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छे से बॉल पोजीशनिंग रखते हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों बहुत सेफ खेलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ चलिए लाइक वो फन खेल रहे हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा फोकस होके खेलेंगे और वो जीतना चाहेंगे। Oh, oh. This is what I was talking about. V Sharma just breaking free. Oh no way! Yes. That was not green time. Yeah, that's there. But Van der Sar, what a save! Especially when you've beaten the defenders, it's gonna be a little hurting when you fail to score a chance which could have been really golden. And especially against Imad, we haven't seen a lot of players scoring goals against him. And right at the very first attack of the game, yeah, that hasn't happened. But yes, now Imad, getting back into his senses. Now he breaks free through that right wing with Ashraf Hakimi. Will be looking forward for that cutback. Gets towards Ronaldinho, but Virgil van Dijk just charges in and steals that ball away. Now FC Goa, they resume. जिस तरीके से वो सेव किए थे, ये एक टैक्टिक है लाइक विद वैन डे सार। आप थोड़ा जस्ट आगे लेके आते हो, पूरा लेके आओगे तो चिप हो जाएगा, बट थोड़ा आगे लेके आते हो ताकि जो वो एंगल है वो एंगल थोड़ा श्रिंक हो जाए, लाइक जिससे कि स्विंग कम होता है और आपके बॉडी के आसपास ही रहता है बॉल। और वही चीज़ इधर इमाद की तरफ से किया गया था, वो डेलिबरेटली किया गया था और उसका फायदा उनको प्रॉपरली मिला, क्योंकि उधर देखिए और कोई ऑप्शन भी नहीं थे, डिफेंडर्स को पार कर ही चुके थे। बट इस बार अटैक पे जा रहे हैं इमाद, बट बहुत शानदार तरीके से विद स्लाइडिंग टैकल लुशियो इधर बॉल छीनते हुए दिखे। आज दोनों ही साइड से वो इंटेंसिटी नजर आ रहा है और व्हाई नॉट, क्यों नहीं आएगा। दोनों काइंड ऑफ बेस्ट प्लेयर्स इधर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए, अगर ये पहुंच जाता मेसी के पास तो ये वंडर्स हो जाता, लेकिन जो उन्होंने डिफेंड किया इधर वो भी लाजवाब था। Yeah, I mean, the way these two players are playing, this was bound to happen, right? We could feel those tremors in the ground. It's shaking for FC Goa. It's getting worse with every single passing second. They need to start scoring goals. They need to somehow fight for keeping their unbeaten streak still alive. But this looks a goal, and there you go. V Sharma, finally, you could see a huge sigh of relief. And Imad just suddenly taken aback, did not see that coming. Nice passing going on, beautifully set it up for R9. And if that's a trophy captain, he does not fail to miss. He scores. Yeah. लेकिन आज फॉर्मेशन चेंज के बाद वी शर्मा डिफेंडिंग साइड पे काफी बेहतरीन दिख रहे, क्योंकि इसके पहले अगर ये पासेस निकालते तो वो एक बीच में मिडफील्ड के ऊपर 3 प्लेयर रहते थे तो एक ट्रायंगल बनता था और ट्रायंगल के बीच में से ये सब पासेस निकल जाते थे। लेकिन आज जब 2 डिफेंडर को खिलाया जा रहा है तो वो ऐसा पिलर कहने के काम करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी शानदार आउटकम अभी तक तो देखने के लिए मिला है एफसी गोवा की तरफ से। और एफसी गोवा शुरुआत किए थे कहने के एक हार के साथ, लेकिन मौका बन गया था और पहले ही जो 1-2 चल रहा था उसको देख के लग रहा था कुछ तो होने वाला है और वो फाइनली हो गया। इमाद इस इक्वलाइजर, ये चीज तो ये बात तो ऐलान कर चुके हैं कि इतना इजी नहीं होगा वी शर्मा
सिनेरियो इधर अलग है और वही चीज कहीं ना कहीं दिख रहा है। पहला 30 मिनट्स पैसा वसूल गेम इधर चलता हुआ, अभी भी 60 मिनट्स बाकी है। मैं तो हर एक मिनट इधर एंजॉय कर रहा हूँ इस गेम के। And did you notice that goal that Imad scored was kind of in a similar fashion to what V Sharma did? But not just that, the ball went past through Virgil van Dijk's legs and beat the keeper. Such was the accuracy, and we haven't seen a lot of players do that. And yes, it is Imad, of course. And yeah, if FC Goa could score a goal, Northeast United FC couldn't be far behind, right? And instantly equalizing, taking no further delays. And yeah, he does that. Now we kind of see that both these players are now have gotten back to the meta formation. That's 4-3-2-1, right? And at this point, we have to see who's going to score that next goal, because I don't feel like this match is going to just settle down at maybe a 2-1 scoreline. I think this is heading towards a big goal scoring game, right? With both the players kind of really on their toes, they are maxing out, they are putting everything on the line. You could see from their reactions, even it's quite evident even from Imad's side, especially after he conceded one. You could see that he was not happy about it, and he was also in a little bit of a shock, but then he responds back, and that's a message, right? And he could have maintained that poker face against any other club, that's so okay, but not against V Sharma. You have to be celebrating, you have to be happy, as V Sharma looking to strike back. Again, building his play with Bellingham, with Ronaldinho, R9, in fact, went for a roulette, did not get past. And as a result, Northeast United FC, they bravely. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वो अगर इधर ड्रॉ पे भी खत्म करते हैं फिर भी उनका काम हो जाएगा और वो इधर से 3 पॉइंट लेके चले जाएंगे और वो हरा देंगे एफसी गोवा को। बट वी शर्मा को रोक के रखना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। एम्बापे राइट हैंड साइड से रन निकालने की कोशिश, बीच से रोनाल्डिनो हालांकि बॉल के लिए कॉल तो कहते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, बॉल प्रॉपर्ली रख रहे हैं अपने पास और कोशिश हिमात का यही है कि जो अटैक वो बना रहे हैं वो फिनिश हो, क्योंकि ज़्यादा अटैक बनाने का मौका मिलेगा नहीं वी शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से वो आज डिफेंड कर रहे हैं। वी शर्मा बॉल छीने कंट्रोल पे है उनके और कैप्टिव या के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इधर विश्वास दिखाते हुए, और हम देखे हैं वी शर्मा ज़्यादातर टाइम कैप्टिविया को लेके खेलना ही पसंद करते हैं, तो यही जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। फर्स्ट हाफ खत्म होने के लिए सिर्फ 5 ही मिनट बाकी है। क्या एक गोल आएगा, क्या कोई भी क्लब इधर से एक एडवांटेज पे जा पाएंगे ये फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले, वही देखना होगा। Yeah, and that's the big question over here for which you are on the path to find answers. As you can see, that box-to-box passing just going on. V Sharma looking relentless, has room with Jairzinho, takes that shot, but a deflection from Maldini and kind of reduces the power on the ball, making it look easy for Van der Sar. And there you have it, ball goes out of play, it's out for a throw. And still that final attack remains, which FC Goa would embrace. And at this point, Jude Bellingham wanted to take that shot, but no, referee blows the whistle. And there you have, nothing separating these two clubs as the end of the first half, and it is 1 each apiece. पोजीशनिंग की अगर बात किया जाए तो एफसी गोवा इधर 57% पोजीशनिंग इधर होल्ड की है, शॉट्स इनकी तरफ से 3 जा चुका है। सो या कौन ज्यादा अटैकिंग है इस गेम के अंदर वो तो देखिए पता चल ही रहा है। पास एक्यूरेसी की भी अगर बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा है एफसी गोवा के, और नॉट ओनली दैट, लाइक उन्होंने ज्यादा पासेस भी खेले हैं। देखिए जब आप ज्यादा पास खेलते हो तब उस टाइम पे पास एक्यूरेसी कम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उल्टा उनका ज्यादा है, वो भी 94%। ऑन द अदर हैंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ज्यादा पासेस खेलने का मौका ही उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि इमाद इंडिविजुअल प्ले के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। जब भी किसी के पास बॉल जाता है, अगर उनके पास पोटेंशियल हो, जो कि इधर हर एक प्लेयर के पास है, क्योंकि सब के सब कार्ड्स जो है वो मिलियंस में बिकते हैं, और सिर्फ वही नहीं स्किल रेटिंग जो है वो बहुत आई है, तो वो इंडिविजुअली ड्राइव करते हुए दिखते हैं प्लेयर के साथ बॉल लेके। तो पासेस कम है लेकिन पास एक्यूरेसी उसके ऊपर जरूर ध्यान देना होगा इमाद को। Yeah, I think that needs to be there.
And one thing that I liked about Imad is his defense has been quite solid. You could see him making a lot of interceptions. He has made a lot of, I think he's made quite a few tackles, and he's gotten successful. I think it was just that one tackle that did not work. But on the remainder of the occasions, he's kept Vanshaj at bay. So that is there. But now this time it won't be enough. Nice driven pass, and with Jesse, this time V Sharma won't miss. And the commencement of that second half, sort of, we're kind of living those moments of that first half also, where he kind of attempted a shot with Jairzinho but did not go through. But this time wasn't the case. And yeah, Jairzinho has been one of those prime reasons why we don't see Garincha play. जी हाँ, फुट बर्थडे कार्ड हालांकि गरिंचा का भी आया था, लेकिन वो 92 रेटिंग था मोस्ट प्रोबेबली। नो, शायद गरिंचा का नहीं आया फुट बर्थडे कार्ड, नॉर्मल प्राइम कार्ड आया था जो कि 92 रेटिंग का है। बट 93 जार्जिनियो, वाओ वाओ, ओह नो, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। उन्होंने डिफेंस को भी क्लियर नहीं किया, जस्ट वो शॉट ले लिए और वो गोल भी हो गया विद मेसी। मेसी के साथ इमाद का ये कॉम्बिनेशन हमेशा कुछ मैजिकल करके जाते हैं। Just look at that pass. Just way he. Oh, oh my goodness, Imad, how can you? How do you do that? That little backheel pass there. That is, I felt, made the whole world of difference. V Sharma did not see this coming, and TT. This is where Imad kind of goes on to craft such goals. That he's like that artist, that magician, and makes it look so smooth. And yeah, V Sharma does not get enough moments of happiness, as he has to again struggle to find that winner. V शर्मा आज वो काफी ज्यादा प्रेशर में है। पिछले दिन भी थे हालांकि, बट आज थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर इधर से वो ड्रॉ पे भी खत्म करे तो भी निकल जाएगा गेम हाथ से। थियो हर्नांडेज टू रूडली, थियो हर्नांडेज अभी भी मौजूद, पास किया गया, बट देखिए मेसी को आप लॉब पास तो दे नहीं सकते, उस पर रिसीव करना मेसी के लिए बहुत टफ हो जाता है, तो ना लेना ही बेटर है। बट बीच से काउंटर पे बेलिंगम के साथ, बेलिंगम टू रोनाल्डो, रोनाल्डो फिनिश, तीसरा गोल, बेहतरीन ड्रिबलिंग, आखिरी मोमेंट पे जो राइट कट किए उसी पे कहीं ना कहीं गोल डिसाइड हो गया था। और क्या ये जगह जस्ट आउटपुट के साथ बाहर की तरफ लेके गए और उनके जो डिफेंडर है वो देखते रह गए। Oh, I'm pretty sure we're gonna see an equalizer coming up next. That has literally been the storyline. But yes, not just that. Yeah, that cutting towards the right gave him that extra room, but also that ball roll scoop on Jude Bellingham, right? That sort of enabled him for that pass, because for a moment we thought that he might have to take a shot, but no. Then you realize that he had that extra man, and this is where I say, right, Vanchurch, he's got his fundamentals so correct, and now, well, Imad unleashes his demon and gets Erling Haaland off, I believe. Yes, yes. You could see him over there as the left center forward. And let's see what could he produce with Erling Haaland this time. You get avenues, you can go for those headers, then you suddenly just breach through your opponent's defense. And I think for Hyderabad FC, especially for Genesis, he's worked like a charm. So even Imad must be looking for recreating something special, something magical. But also, now this is where you see Imad kind of trying to sweat it out with Ronaldinho. Will have to take that shot. But Van der Sar for the rescue. V Sharma, I think he's got to work a little bit more on his defenses. You can't let Imad get in like that. He's been making the goals look so easy, as this time that little step over was all Imad needed to convert it. And I knew the moment V Sharma scored, Imad couldn't be kept at bay. And for the first time, you see that he goes for a default celebration on Kylian Mbappe. Usually, we've seen Imad kind of opting for that meditate celebration, but this is where I think FC Goa
make those suitable changes in their playing 11, get a few subs up, and somebody has to take that first foot forward. Somebody has got to take that risk, go a little ultra attacking, make a few changes in your formation, because nothing separating these players. And talking about the storyline, TT, you also said, right, if this match ends as a draw, then it is 3 points secured for Northeast United FC, and they will become the first club to beat FC Goa this season. एंड वो होता हुआ दिख सकता है जिस तरीके से खेल रहे हैं. लाइक हमने तो आखिरी गोल देखा, बट उसके पहले रोनाल्डिन्हो के साथ जिस तरीके से उन्होंने ड्रिबल किया था, आई थिंक लूशियो थे, लूशियो को ड्रिबल करके लाइक पीछे से सिर्फ उनको घुमा के लेके चले गए. ये ड्रिबलिंग्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा लाजवाब दिख रहे हैं. बट वी शर्मा, उन्होंने जब 3 गोल स्कोर कर चुके थे, देन वो चौथा भी कर सकते हैं. अभी भी टाइम है, और अगर वो चौथा करेंगे देन उनको डिफेंस के ऊपर जो है वो ध्यान देना होगा. तो डिफेंस जो है वो दोनों का ही आज टूटता हुआ दिखा है कुछ कुछ सिनारियों पे. कुछ कुछ जगहों पे बहुत अच्छा डिफेंडिंग करते हुए दिखे हैं दोनों ही प्लेयर्स. बट यस, वी शर्मा के लिए जरूरत है एक गोल और वो डिफरेंस कम से कम एक गोल का. 69th मिनट के ऊपर ये गोल आया था और इक्वलाइज होता हुआ देखने के लिए मिला. मेसी को लाया गया है इधर, और उसी के साथ यूसेबियो, डे ब्रुयना. तो यूजुअली हम देखते हैं कि मेसी को सब ऑफ किया जाता है, बट इधर एज अ सब्स्टिट्यूट मेसी को लाया गया है. सो लेट्स सी लाइक क्या चल रहा है इधर विशर्मा के दिमाग में. I think he would be expecting a little bit of an extra ball control there because of the type or kind of play that he sort of emulates, right? And Messi sort of helps him in doing that with Eusebio. The new Eusebio card has been one for all these players. Getting KDB also up with Jairzinho, and he will take a shot. And this is exactly what FC Goa needed at this time. Another passing play just going on, beautifully done, and just drives the ball to that left corner. And Imad just left watching. And you could see, right? You could see that Vanshaj showing that intent right from the get-go. He wants to salvage that point. But such has been the storyline in this matchup that if one side scores, the other gets an equalizer instantly. Now we still have a couple of minutes before full time, and Imad at this point, he's got to go all out. और अभी तक जिस तरीके से गेम चला है उससे तो मुझे लगता नहीं है कि 5 मिनट से ज्यादा चाहिए होगा अगर इमाद को गोल मारना है तो. लेकिन देखिए, इमाद को रोकना होगा. वी शर्मा जिस तरीके से लाइक वो गोल करके आगे तो चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से कंसीड भी कर रहे हैं. सो उस जगह पे अगर होल्ड करा सकते हैं इमाद को, देन ये गेम और उसी के साथ 1 पॉइंट और ये जो अनबीटन स्ट्रीक, सब कुछ बच जाएगा फॉर एफसी गोवा. एफसी गोवा स्पेशली लाइक वी शर्मा की अगर बात किया जाए, जो उन्होंने चेंजेस किए हैं पासेस के साथ, काफी शानदार गोल इधर दागे. लेकिन जब वो मिडफील्ड के तरफ से उनके डिफेंस की बारी आ रहा है, देन उनके जो मिडफील्डर्स है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ड्रॉप डाउन कराना चाहिए कंट्रोल करके. क्योंकि हम जानते हैं कि डिफेंडर के पास अगर बॉल जाता है, देन हम लोग ज़्यादातर टाइम डिफेंडर के साथ चेस करते हैं बॉल को. बट मुझे लगता है अगर वो डिफेंडर को अपने जगह पे छोड़ दे अपने एआई के साथ, एंड उनके मिडफील्ड को लेके आते हैं, तो शायद एक मौका बन सकता है और ये एटलीस्ट एक गोल जो है वो बचा सकते हैं ये डिफरेंस को. बट लेट्स सी, ये तो उनको बहुत बेहतर पता है मेरे को, क्योंकि वो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं प्रोफेशनली. सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे डिफेंड करने के लिए. देखिए, हालैंड दौड़ चुके थे, कोशिश यही था कि एकदम एक लॉब थ्रू कर दे और उसी के साथ जाके वो हालैंड गोल कर दे, बट वो हुआ नहीं अभी के लिए. और देखना होगा लाइक वो होगा भी या फिर नहीं. All right, Imad, he's gonna put all his eggs in a basket, and will be relying on this one attack. He's got that constant passing going on. It's so difficult to guess who is going to pass next. And this time, V Sharma not letting him through. Now, where he would want to just kind of seize that moment and score another one and settle it. Because it's still quite murky to say if FC Goa can win this battle, right? Because honestly, the way things have gotten
Saranchen winning the first game, the second being a draw. FC Goa ought to win this one in order to keep their unbeatable streak alive. Not a lot of clubs have achieved that feat, and FC Goa are ever so close. And all they need to do is just defend at this point with all their might or score one more. And you could look at him, right? He's not just giving that ball away. Oh, he wanted to pass towards Eusebio, but was not received by him. As a result, now the possession has gone back to Imad, where he needs to perform one more spell, and a spell that binds V Sharma forever. Because even with a draw, I think that's still going to be counted as a win for Northeast United FC, for the Highlanders. But at this point, I think FC Goa have no intent, as with Mbappe, they have broken free. You could see the keeper also being controlled. And now, all right, a little bit of delay in terms of decision making, and the defense has come back. But V Sharma making sure that he at least salvages a corner out of this one. Let's see what can he produce with this. And there you go. Keeping no corners there, and V Sharma wins that game. That late the late winner, ensuring that FC Goa at least salvage a point, and even on top of that, they maintain their unbeatable streak in the eISL. But Northeast United FC, they got ever so close. The only club that could manage to pull out a draw. And haven't really seen Imad losing a lot of games, but this was definitely one that you will not forget. वी शर्मा अपना जो गेम है वो एक बार फिर से दिखा के गए, और जो डोमिनेशन वो बाकी क्लब्स के ऊपर, बाकी प्लेयर्स के ऊपर दिखाए थे, वो अभी भी कायम रखे। बट इमाद, आज उन्होंने 3 गोल तो स्कोर किया, बट शायद आज उतने मैजिक जो है वो लेके नहीं आए थे और वो चौथा गोल नहीं आया। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो या 1 पॉइंट लेके खुश रहेंगे। बट देखिए, एक चीज़ तो हो चुका है कि एफसी गोवा ये कर चुके हैं कि वो इस पूरे eISL सीजन 2 के अंदर एक भी गेम ग्रुप स्टेज पे तो एटलीस्ट नहीं हारे, और इधर इसके बाद तो हारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हार गए तो फिर मतलब काम ही तमाम हो जाएगा। तो इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं हारना चाहेंगे। बट अभी तक एक भी गेम जो है वो नहीं हारे, और आज का भी एक ड्रॉ के साथ चाहेंगे। सो बहुत बहुत ज़्यादा शानदार। आई डोंट नो, लाइक पिछले साल भी कोई ऐसा कर भी पाया था कि नहीं। आई डोंट थिंक कि कोई कर पाया होगा। No. ये अभी के लिए तो eISL की हिस्ट्री पे पहली बार हुआ है। Yes, and the Gors and even their fans are going to be so happy. But yes, one thing for sure, that Northeast United FC made them bleed, right? It's not like the Gors just walked away with 3, right? And at least showed the world that yes, if we try and dig in a little bit deeper, maybe we could defeat them. And for that, I mean, the mystery gets answered in the playoffs, where we will for sure get to see both these clubs going up against each other. Could be the grand finals, but regardless, both these clubs have already made their way in through to the playoffs, and where FC Goa remain at the top, and Northeast United FC at the second spot, so uncontested. And well, with this match coming to an end, we could see, right, that Imad, we could not see that sort of variations that he usually puts on the table, right? We have seen so many kinds of shots. I mean, don't get me wrong, those goals were still spectacular, and that came from constant passing between the players, and that is what Imad did. But then again, when you talk about those long shots, right, those finesse, those trivelas, those crosses coming in, the variations that Imad has shown us earlier, that was missing, because V Sharma was putting so much pressure on him. As we take a look at the scorecard and find out for one last time, when these two titans collided, it was Saranch in the first game. He managed to get that victory, but when it came down to that co-op game, Adi Zima and V Sharma kept themselves in there, put their foot to the metal, and somehow managed to get a draw out of which.
I think from Northeast United FC had already secured that at the very bare minimum. They're going to take home 1 point. But the final showdown and V Sharma managing to score against Imad, and he scored 4 goals, which means that now he is tied up with Crusher to be the leader topper in the sense of scoring the majority of the goals. So yeah, that is there. It has been tied up there. But let's take a look on who the MVP was. I'm pretty sure it's going to be Saransh Jain. The first matchup, a 5-goal haul for our champion, the defending champion of first season's eISL. And what a time for Saransh Jain to come back into his old self, where he's unleashing and getting those 5 goals and heading to the playoffs. I think this is going to act as a major catalyst, and I won't even be surprised if the Highlanders even go on to win this season. वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है और शायद फॉर श्योर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो लैन पे। और अभी तो दोनों के दोनों ही क्लब्स ऑलरेडी क्वालिफाइड थे फॉर द लैन एंड प्ले ऑफ, सो या फॉर श्योर बहुत बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और ये भी हो सकता है कि आज शायद अपने जो फुल पोटेंशियल है वो कोई भी प्लेयर ने नहीं दिखाए हो, क्योंकि दोनों को ही पता है कि एक दूसरे के साथ तो फिर से भिड़ना ही है। तो बहुत कुछ हो सकता है कि स्ट्रैटेजी जो है वो अभी भी छुपाया हुआ है, बट ये देखिए एक सस्पेंस बना हुआ रहेगा जब तक हम लोग प्लेऑफ्स नहीं देख रहे हैं। Yeah, I mean, for the playoffs, I'm just getting so excited, right? And even you viewers, right? If you haven't still subscribed to the channel, or if you haven't followed us on Instagram, the eISL page, then do make sure and book your dates for the 6th and 7th of May, because that day you're going to see history being created once more. We find out who the champion is. But hey, folks, that being said, this fixture has come to an end. But hold on, our league stages aren't over yet. We still have one more fixture to go, but that's going to happen after this short little break.